So the water cycle, you have seen how water evaporates from water bodies and subsequent condensation of this water vapor lead to the rain. But we don't see the seas and oceans drying up. So how the water returning to these water bodies? Can you tell me how they are returning to the water bodies that they Yes, ma'am. Yes, ma'am. whole Ma'am, whole process in which water evaporate and falls on the land as a rain and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle. ठीक है, this is the definition for water cycle, in which you can see that Yes, ma'am. by the sea and ocean the huge amount of water evaporates daily. Okay, and then that water goes up and it is converting into the clouds. You can see the picture and you can see this, that evaporated water is converting into the clouds. Okay, and then the clouds goes where wind blows, and then they are giving the rain. Then after that, that water sweeps down to the earth, or any other river, pond, it goes to there. And then after that, after all the processes, it goes to the back to the sea or ocean. Okay, so some of it seeps into the soil and becomes part of the underground reservoir of fresh water. You know that each and everywhere under the ground there is a water reservoir, right? So, or we bring it to surface for our use through wells or tube wells. Water is also used by terrestrial animals and Ma'am, plants. what is mean by tube wells? What is what is tube wells? Tube tube wells. Tube well. Farmers use tube well. What it is doing, if there is a well, then they are pumping the water from the well by a pump or motor. Okay, and that water is coming through the tube. So that is called tube well. Okay, and then they use that water for the irrigation purpose. मतलब जो भी वहाँ पे उनको irrigation करना है, पानी देना है, watering करना है plants को, they do that by the water. Okay, understood? Means underground water को पंप के थ्रू ऊपर खींचना और फिर उसको इरिगेशन में यूज करना, दैट इज कॉल्ड tube well. Okay, so water is also used by terrestrial animal and plants for various life processes. Let us look at another aspect of what happens to water during the water cycle. As you know, water is capable of dissolving a large number of substances as water flows through or over rock containing soluble minerals. Some of them get dissolved in the water. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organism. Okay, so all the nutrients, all the salts are dissolved in the water, and then they go to the water reservoir, whatever it is, sea, ocean, river, pond. Okay, so this is called water cycle. Now, next cycle is nitrogen cycle. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. You all know that. And nitrogen is also a part of many molecules essential to life, like protein, because protein is made up of nitrogen. Nucleic acid like DNA and RNA,
and some vitamins. Nitrogen is found in other biological important compounds such as alkaloids and urea too. Okay, so this is nitrogen is thus an essential nutrient for all life forms, and life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. Okay. However, other than a few form of bacteria like life form are not able to convert comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecule. So these nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of dicot plant. Okay, so you know that what it is. Excuse me, ma'am. Nitrogen. Yes, yes, Kaike, tell me what happened. Tell me. Yes, tell me. Yes, what happened. मैम उसका नेट प्रॉब्लम है, उसका वीडियो भी नहीं दिख रहा है मैम। Okay. Okay. See what it is. Nitrogen fixing bacteria you have to see here, because you know that There is a nitrogen fixing bacteria. direct, Ma'am, can we say that nitrogen fixing yes, it is nitrogen fixing bacteria, and जो इसका particular नाम है वो है मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और एक जो कि क्या करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब वो नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो क्या होता है एक्चुअली, वी कैन नॉट टेक डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, because when we take air inside by the respiration process, we only absorb oxygen, we don't absorb nitrogen from the air. So what will how we can take nitrogen in our body? So there is a food. Okay, by the food we can take nitrogen inside our body, and that food will means that is plant. Okay, and then how plants will absorb nitrogen, because they are also absorbing carbon dioxide from the air. Okay, so they are absorbing nitrogen with the help of water that is dissolved in soil. Okay, and then how nitrogen will dissolve in the soil? Then you will see some bacteria, what they are doing, they are taking nitrogen from the atmosphere, and then they are converting it, because their waste has nitrogen. So their waste will dissolve in the soil, and then soil gets nitrates, nitrites, and then nitrates and nitrites will dissolve in the water, and that water plant will absorb through the roots. So these plants we are eating, we are having in our food, so we can get the nitrogen. Okay, so that bacteria is playing very crucial role in this process. So that is why that bacteria is called nitrogen fixing bacteria. Understood? Now, so these nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of dicot plant. ये जो बैक्टीरिया रहता है वो डाइकोट प्लांट में मोस्टली पाया जाता है. So most commonly the nitrogen fixing bacteria are found in the root of legumes. Legumes means generally pulses जो होती हैं दाल, उनमें ये बैक्टीरिया मिलता है. जनरली द प्लांट्स विच गिव अस पल्सेस उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं. इन
special structure called root nodules. Other than these bacteria, the only other manner in which nitrogen molecule is converted to nitrate and nitrite is by a physical process. During lightning, the high temperature and pressure created in the air convert nitrogen into oxide of nitrogen, means nitrogen oxide banega that time. So these oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acid. ओके तो उससे क्या फॉर्म होगा, उससे या तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा या तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होगा. Okay, so these are then utilized by various life forms. What happens to the nitrogen when once it is converted into foam that can be taken up and used to make nitrogen containing molecule? So plant generally take up nitrates and nitrites and convert them into the amino acid which are used to make protein. Some other biochemical pathways are used to make other complex compound containing nitrogen. These protein and other complex compound are subsequently consumed by the animal. Okay, so once the animal and plant die, other bacteria in the soil convert various compounds of nitrogen back into the nitrates and nitrites. See, this is the nitrogen cycles. What will happen from the atmosphere? Nitrogen fixation will done by the nitrogen fixing bacteria and it will go to the green plants. Okay, then green plants के को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, एनिमल्स एब्जॉर्ब करेंगे. ओके और या अमोनिफिकेशन के थ्रू वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा and then it will convert into the nitrates and then nitrates and then it will go to the green plants. Otherwise it will directly do the nitrification and then it will create nitrates will go to the, by the denitrification it will go to the atmosphere. Okay, so these all process can happen through the nitrogen. Okay, in which we are also playing a crucial role. Okay. Now, a different type of bacteria convert the nitrate and nitrites into elemental nitrogen. Thus, there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water. So, which get converted to more complex molecule in living being and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. Understood? कैसे नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हुआ, Yes, ma'am. प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ, प्रोटोप्लाज्म जो है एनिमल्स को मिला और डायरेक्ट अमोनिया भी कन्वर्ट हो सकता है, देन अमोनिया से नाइट्राइट, देन नाइट्रेट एंड देन फिर से वो ग्रीन प्लांट्स को मिलेगा. और अगर वो डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस किया है तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट through the lightning process. Okay, so after that denitrification will done. Yes, ma'am. Nitrogen will go to the atmosphere. Yes, ma'am. This cycle is very important. If you have learned this Ma'am, in your mind, then excuse me, ma'am. yes. Tell me, Yash. Ma'am, what is denitrification? What is? Ma'am, this denitrification. 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 Yes, ma'am. It is converting from nitrogen, मतलब nitrate से nitrogen में वो convert हो रहा है direct. मैम उस प्रोसेस को कहेंगे ना मैम वो डीनाइट्रिफिकेशन. उसको प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. और Yes, मैम ma'am. प्लूटोप्लाज्मा एनिमल्स का मैम क्या हो?
What? मैं वो ग्रीन प्लांट से डायरेक्ट एनिमल के प्रोटोप्लाज्म में जाता है क्या उधर? हाँ, the carbon cycle. So yes, Ma'am, समझो green plant died, then what will be happened? green plant Died. died. All the green plants. No, Then one or two little bit. no, one or two, there will be no difference. If all the green plants will not be there, then life is not also possible. Means all the Ma'am, plants are the producers and they are primary source of energy. So जो चार्ट होता है वो पिरामिड होता है ना, एनर्जी पिरामिड, दैट इज मतलब खत्म ही हो जाएगा. सोहम. Yes, ma'am. ma'am, I am saying that suppose one or two green plants are died. The animals didn't eat. They died. Then what will they convert into? They directly Decompose हो जाएंगे ना फिर वो. they directly go to the soil because you know that अगर कोई मतलब प्लांट जो है वो खराब हो जाते हैं उसको सॉइल में फिर से मिक्स कर देते हैं ना, वो जो है मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे. मेन्योर में कन्वर्ट हो गए तो फिर से वो नाइट्रोजन, हाँ मैम. सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स हो गया ना, क्योंकि वो वहां पे जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है उसमें वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we'll go ahead with carbon cycle. Carbon is found in various form on the earth. It occurs in the elemental form as diamond and graphite. You know that carbon is the carbon has many allotropes. Okay. सो एलोट्रोप्स मीन्स कार्बन के बहुत सारे फॉर्म अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं जो सिर्फ कार्बन से ही बने हैं, बट दे ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज यू नो दैट कोल जो होता है ब्लैक कलर का जिसको फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम कार्बन. कार्बन का बना होता है वो, कंप्लीट कार्बन. ओके, एंड डायमंड्स, Yes ma'am. you know that diamond is also from diamond Carbon. Yes ma'am. बना होता है. तो आप खुद ही देखो कितना बिग डिफरेंस है प्राइस में, डायमंड का प्राइस एंड कोल का प्राइस. सो क्या क्या एक डिफरेंस आया है कि हाँ मैम. इतना कोस्ट और एक चीज एकदम कोई कोस्ट नहीं उसको. सो देयर इज अ एंड बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन. सो क्या होता है कि एक रेगुलर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कार्बन का, अगर वो उसमें फॉर्म अरेंज है कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है डायमंड है, मतलब उसमें एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर हो गया. बट कोल में रैंडम कार्बन्स रहते हैं, कहीं भी कोई भी अरेंज रहता है. ओके, सो उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है. सो यहाँ पे हम मतलब कार्बन को एक मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया कि व्हाई इट इज लाइक दिस. So carbon is also, you know that it is very important for our body because our body is made up of carbon, right? Because all the protein, carbohydrate, fat, they contain carbon in it. उसके अंदर जो molecule होता है Yes ma'am. कार्बन होता है. सो जब हमें जो है कार्बन की जरूरत है तो हम किस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं. तो हम तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लेते हैं. हम कौन सी सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. ऑक्सीजन लेते हैं मैम. कार्बन कहाँ से आया? सो उसको हम एक बार इस डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट
in atmosphere and in this carbon मैम ये डायग्राम पेपर में आ सकते हैं मैम? पेपर में आपको डायग्राम बनाने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है because these all the cycles will come for 4 marks in the exam. हाँ मैम। मैम कम से कम 4-5 मार्क्स क्या आ सकते हैं मैम? Yes, 4 marks for one यस मैम। cycle that can be carbon cycle, nitrogen cycle, or it may be this oxygen cycle. Okay, understood? जितने भी cycle हैं ना वो सारे के सारे जो है हाँ मैम। आ सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको ये डायग्राम, हर एक का ये डायग्राम है ना, इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। हर एक का फ्लो चार्ट अवेलेबल है ना, तो हाँ मैम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यू हैव टू ड्रॉ एंड देन यू हैव टू अंडरस्टूड। सो कार्बन डाइऑक्साइड यस मैम। मैम फ्लो चार्ट बनाना इजी है मैम, बट एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। you have to do that. Okay, so that you have seen that ओके मैम। the carbonates it is converting in water like rain. When rain comes, then you know that about you have heard about the acid rain. ओके तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में मिक्स होने के बाद कार्बोनेट बनाती है और वो कार्बोनेट जब एसिड के थ्रू मीन्स आपकी अर्थ पे आते हैं तो कार्बोनेट्स जो है वो लाइमस्टोन डेवलप कर देते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम ताजमहल का रंग मैम एसिड रेन की वजह से चेंज हुआ है मैम, पहले ऐसा नहीं था मैम, अभी सिर्फ एसिड रेन के कारण मैम उसका रंग चेंज हो गया है मैम। ताजमहल का कलर एकदम वाइट था और ड्यू टू एसिड रेन इट इज बिकमिंग नाउअडेज येलोइश कलर हो गया है। ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड हाँ मैम। limestone. Okay, this is the first one process. Okay, now second process you can see plant will absorb the carbon dioxide and then you can see that if plant goes to the earth, plant जो है अर्थ में दब जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, फोसिल कन्वर्ट बन जाता है। उसके बाद अगर वो सी प्लांट्स हैं और सी प्लांट्स जो है वाटर के साथ दब गए हैं अर्थ के अंदर तो वहां पे क्या बन जाएगा, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम बन जाएगा। ठीक है, और अगर प्लांट्स जो है वो हमने खा लिया मीन्स एनिमल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उसका बन गया, एनिमल्स ने एब्जॉर्ब किया, तो एनिमल्स में दो टाइप का, या तो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल, कोई कोई एनिमल्स की शेल होती है ना, जैसे कि टॉर्टोइस का शेल होता है, उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें शेल होता है। हाँ मैम। या तो वो शेल में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट के रूप में, या तो क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड वो फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? और या तो डायरेक्ट, आपको पता है यस कि मैम। नाइट में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स नाइट के टाइम में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होके एटमॉस्फेयर में आ गया। ओके, अंडरस्टूड दिस? समझ में आया ये? Yes, ma'am. ओके सो Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. okay so now we will read it once. The carbon is found in various forms on the earth. It occurs in the elemental form as diamond and graphite. In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere, as carbonate and hydrogen carbonate salt in various minerals. While all life forms are based on carbon containing molecules like protein, carbohydrate, fat, nucleic acid and vitamins, and the endoskeleton and विटामिन
of various animals, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन मतलब जो shells होते हैं उनके ऊपर, are also formed from carbonate salt. Okay, carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecule. These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis of other biologically important molecules. Okay, so the utilization of glucose to provide energy to living things involve the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into the carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere, and another process that add the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion. Combustion means, what is the combustion? Tell me, what is combustion? Where fuel, Burning process. yes, correct. Where fuel are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation, or an industrial process. So, in fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the industrial revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. Carbon like water is thus cycled repeatedly through different form of various physical and biological activity. Okay, understood? समझ में आया सबको ये कार्बन साइकिल?